Hello you all, welcome back to my channel. This is me too. In today's video I'm going to show you all how I went from this to this. So this look is like a no makeup look, and I've created this look using more of skincare products and less of makeup products. It's like the clean makeup जो आजकल बहुत trending है, and I've been seeing the clean makeup all over my YouTube. So I thought let me also participate in this. We are gonna try to achieve that healthy, hydrating skin. So let's get into it. मैं ये लगा रही हूँ. Sorry, different. Also I chop my hair and I feel so nice. जिस दिन मैं बाल कटाती हूँ ना, उस दिन मुझे इतना अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है वाओ मेरा सर काफ़ी हल्का हो गया है, सारी गंदगी चली गई है. So I feel nice. So the first step we are going to do is clean our face, and for that we are going to take this cotton pad and some raw milk. अगर आप मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे तो आपने बहुत बार देखा होगा कि मैं ये हैक यूज़ करती हूँ. आई लव टू यूज़ raw milk as my cleanser. Raw milk is so good for skin. It's like a natural cleanser. So I'm going to use this. I'm going to dip this cotton pad. इससे ना बहुत गंदगी हो जाती है. मेरी मम्मी हमेशा चिल्लाती है, but it's okay. I'm just applying it all over my face like this. If you're from Rajasthan, आपको वो ब्रांड पता होगा दूध का सरस. वो मुझे बहुत ज़्यादा यम लगता है. मतलब मैं शक्कर भी नहीं डालती, कुछ नहीं डालती, मैं ऐसे पी जाती हूँ. नानी के घर पे ज़्यादा भी पीती हूँ, बड़ा मज़ा आ जाता है. आज मुझे बहुत याद आ रही है ये लगा के. And now I'm gonna use this for your Luna 2. This is a really good product and it is also really fancy. So अगर आपको ये यूज़ नहीं करना है तो आप कॉटन पैड यूज़ कर सकते हो. कॉटन पैड से ही ऐसे एक्सफोलिएट कर सकते हो, मसाज कर सकते हो. I just washed my face and I think you can definitely see the slight glow on my cheekbone, and yeah, it's a really good hydrating natural cleanser. What else do we need in this planet? The skin is feeling so nice and plumpy already. Now next up I'm going to use this Kama Ayurveda Kumkumadi brightening Ayurvedic face scrub. You guys know it. I only use this face scrub. मुझे ना शायद हंड पे जाना पड़ेगा एक फेस स्क्रब के. लेट मी नो व्हाट इज़ योर फेवरेट फेस स्क्रब जिसे मैं भी यूज़ कर पाऊँ, वरना मैं सिर्फ यही यूज़ कर रही हूँ. बहुत टाइम हो गया. इसमें ना एकदम बेसन की खुशबू आती है. नाउ आई वुडंट रिकमेंड यू टू स्क्रब डेली. मैं स्क्रब सिर्फ 5-6 days में एक बार करती हूँ, डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप. डू नॉट एक्सफोलिएट डेली. वो आपकी स्किन को बहुत हार्म करेगा और आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है. सो डोंट डू दैट. यू कैन यूज़ एनी प्रोडक्ट. ऐसा नहीं है कि जो मैं वीडियो में बता रही हूँ यही प्रोडक्ट यूज़ करना है. दिस वीडियो इज़ मोर ऑफ द प्रोसेस, द स्टेप्स, एंड लेस ऑफ द प्रोडक्ट रिकमेंडेशन. ओके, BRB. Now next I'm going to use this Aqualogica Hydrate Plus Sheet Mask. Now this one has coconut water. बहुत ही attract कर दिया मुझे इस ingredient ने. So I'm going to use the sheet mask. I'm applying sheet mask to get that next level natural glow. If you want that glowy skin and if you want your glow to last, you have to. मैं बहुत ही गंदा खोलती हूँ. मैं क्या बोल रही थी? So if you want that glow and if you want your glow to last really long, like throughout the event, throughout the function, you should definitely include a sheet mask. Sheet mask कितना pampering लगता है और एकदम ऐसा लगता है this is my me time D&D. Oui, this is ultra. बहुत ही anesthetic way में मैंने मास्क लगाया है. I'm gonna keep it for 20 minutes. 20 minutes done. I'm not gonna wash my face because I want the serum to get into my skin and I want my skin to glow from within. So I'm going to keep it like this. You can definitely massage so that the serum gets absorbed quickly.
सॉरी मैंने लाइट्स बंद कर दी, बहुत ज़्यादा फ्लिकर कर रहा था, बहुत अनॉय कर रहा था. नाउ मास्किंग इज डन. सो बेसिकली स्किन केयर इज डन. Just the moisturizer part is remaining. This is the Dot & Key Vitamin C moisturizer, vitamin C plus E super bright moisturizer. I'm gonna apply this. You cannot skip moisturizer. और इसका importance बताना तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि I think अब तक तो सबको पता पड़ ही गया होगा, एटलीस्ट मेरे फॉलोअर्स को पता ही पड़ गया होगा कि मॉइस्चराइज करना कितना इम्पॉर्टेंट है. Can you see the glow? Like, it's so evident. My skin is looking so plumpy, so radiant. I mean, नीचू प्रोसेस ना सब करने वाला है ये क्लीन मेकअप वाला. Now we are done with skincare, which was the maximum part of my clean makeup process. Now we are just going to do a couple of more things and then we are done. So first I'm going to apply some concealer. This is the Fit Me in the shade 25 medium, and I'm just going to apply it थोड़ा सा, इतना सा, थोड़ा सा, इतना सा. That's it. Ting 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 ting. Did you see? मैंने एकदम थोड़ा सा कंसीलर लगाया क्योंकि मुझे इस लुक में सिर्फ अपना बेस अच्छा रखना है और बेस भी स्किन केयर का अच्छा रखना है और मुझे बिल्कुल मेकअप नहीं चाहिए. दिस इज़ समथिंग यू कैन डू व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, व्हेन यू आर ऑन रोड. आप ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ईजी है. मेरे फ़ोन को क्या हो गया मुझे पता. थोड़ा सा पाउडर लगाऊंगी जहाँ मैंने कंसीलर लगाया, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वरना क्रीज करेगा, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. सो एकदम थोड़ा सा, लाइक इतना सा. You can apply powder wherever you want, wherever you don't want to shine too much. Like if you have oily skin, you can apply over your nose. For the eye look, I'm just going to use two products, one for my eyebrows and second for my eyelashes. I'm going to use this Lakme Absolute 3D Brow Definer, और मैं ये यूज़ नहीं करने वाली, मैं कुछ फिल नहीं करने वाली. I'm just going to spray a little bit on my spoolie brush and then I'm just going to brush in upward direction. Like this. For my lashes, I'm just going to use this eyelash curler. This is a random eyelash curler from a random store जो मैंने ऐसे ऑफलाइन लिया था. मुझे कलर बोलने होता ही नहीं है, कलर. मुझे याद है जब मैं ये लेने गई थी तब मैंने स्टोर वाले को बोला था कि मुझे कलर चाहिए, तो बोला कलर नहीं है, मैंने बोला कर्लर, आईलैश कर्लर. फिर उससे समझा, बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग था. जस्ट होल्ड फॉर ए कपल ऑफ सेकेंड्स एंड लीव. अगेन just hold for a couple of seconds and leave. Look at this. I'm going to use this Ilana Dream blush in the shade Peachy Peach. Why is it not coming? I'm going to apply the rest of it on my lips. And now to add a little more glow to your skin, I'm going to take a beauty sponge and this NYX Born to Glow illuminator. This is a liquid illuminator, so I'm just going to take a small amount of it, taking a damp beauty blender. Just apply it. For my lips, I'm taking this lip liner from MAC in the shade Spice. So that's it for today's video. This is the look, and I think this look is so apt for the clean look, and you can see how my skin is looking right now. Also, I know this is sort of no makeup look, और ऐसा हो सकता है कि no makeup look की सिर्फ रीब्रांडिंग हुई है और क्लीन मेकअप है, लेकिन बिलीव मी मुझे no makeup look इतना पसंद है कि मैं हर वीडियो में कर सकती हूँ. सो बी इट ग्लास स्किन, बी इट क्लीन स्किन, मैं सारों में अपना अटेम्प्ट देने वाली हूँ. सो प्लीज़ बेयर विद मी. आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट फ्राइडे. बाय.